Hello children, today's topic is vegetative propagation. Vegetative propagation is a means of asexual reproduction in plants in which a new plant is grown by using any part of the plant except seeds. अगर हम सीड लगाते हैं और नया प्लांट बनता है तो दैट कम्स अंडर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इफ अ न्यू प्लांट इज ग्रोन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट सीड्स, यानी सीड के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट को हम यूज़ करें नया प्लांट बनाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एनी पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी यूज्ड लाइक रूट, स्टेम, leaf, bud, cell, etc. Now vegetative propagation is of two types: natural vegetative propagation and artificial vegetative propagation. In natural vegetative propagation, a new plant can be grown by using root, stem or leaf of the plant. By using the root of the plant means we can sow the root of the plant into the soil and we can directly get a new plant. For example, it can be done in mint, पुदीना, तुलसी के छोटे छोटे प्लांट्स तुलसी सीड से भी लग जाती है और तुलसी की अगर हम रूट लगा दें तब भी लग जाती है. देन वी हैव स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी. It can also be grown by the root. Shakarkandi, जो sweet potato है, that is the root of the plant, and we can grow a new plant by using the root of these plants. By using stem, यानी stem अगर हम डालें ज़मीन में, which is bearing a node, then we can grow a new plant. For example, by using ginger, in garlic, and in potato. Potato is also a underground stem. देखिए, a portion bearing eye, ये जो है इस पे ये छोटे छोटे जो हैं ये क्या दिख रहे हैं? These are the eyes of the plant. Potato is an example of underground stem. If we cut a piece of potato with this eye in it, अगर हम एक पीस इसका कट करें इतना पोर्शन और हम इसको if we sow it into the soil, bury it into the soil, it will grow into a new plant. This is how a new plant can be grown from stem. By using the leaf can also be used. Succulent leaves which are a bit thick, for example in bryophyllum. In bryophyllum, the margins of the leaf, these are the bryophyllum leaves, the thick leaves. You can see the margins of the leaves. In rainy season, the buds adventitious, these roots यहाँ से जो है the adventitious roots they develop, a small plantlet grows. Let us see. This is the bryophyllum plant. Again bryophyllum plant. This is how a small bud grows on the margins. ये नीचे छोटी छोटी जो है यहाँ एडवेंटिशियस रूट्स आ जाती हैं, ऊपर लीव्स ग्रो होती हैं. बाद में ये वाला जो पोर्शन है इट शेड्स ऑफ ऑटोमेटिकली फ्रॉम द लीफ एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. यू कैन सी द स्मॉल द adventitious roots and the buds, they are growing from the plant, and this is how a plantlet grows on the leaf, and then this will separate from the plant and it will grow into a new plant individual. So this is how the root, stem and the leaf of the plant, it can be used for growing a new plant.
Next is artificial vegetative propagation. In artificial vegetative propagation, we use several methods like cutting, layering, and grafting. In cutting, the stem of a plant is obtained with a node in it, and it is cut obliquely and then buried into the soil. For example, it is done in rose, sugarcane, etc. Say this is sugarcane में ये जो है portion, this is the bud. For cutting, it should be kept in mind that the stem, it should have a node. Node is the part of the plant from where a leaf arises. तो सेंटर में एक नोड होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा पोर्शन इंटर नोड का लेके हम इसको इस तरह से ओब्लिकली कट करेंगे. देन इट विल बी बरीड इनटू द सॉइल एंड दिस पार्ट विल डेवलप the roots and the stem, it will start growing. Now the next is layering. In layering, what is done? One of the stem of the plant is selected. Say suppose this is the plant and these are the roots and these are the branches of the plant. One of the stem or branch of plant is selected. Which branch? Which lies near the ground. One of the branch is selected and it is buried into the soil. हमने इस ब्रांच को सेलेक्ट किया जो नीचे थी सॉइल के पास, एंड वी हैव buried it into the soil in such a way that a portion is buried and the two ends of the branch, they are still in air, or we can say still above the ground. Now this buried portion, it will develop roots, and हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ roots आ गई और ये this will start growing. जब ये यहाँ से grow करना शुरू कर दे, इसको यहाँ से काट दें, तो this will be a new individual plant. Now cutting is done, we have seen in rose and sugarcane. This layering, this method is done in jasmine, a flowering plant, and chrysanthemum. Now we have another method, that is grafting. In grafting, what is done? जैसे कि हमारे पास ये एक रोज़ प्लांट है which bears all the flowers which are pink in color. ठीक है. We have another plant which have the rose plants. All the plants, they are yellow in color. ठीक है. We will select one stem. एक stem इसकी हमने select की, उसको हमने क्या किया, काट लिया ऐसे ओब्लिकली. ऊपर से हमने इसका ये वाला पोर्शन काट के अलग कर लिया. ठीक है. दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्कियन. दूसरे प्लांट में हमने क्या किया, वी हैव अगेन सेलेक्टेड स्टेम, लेकिन हमने इसका ये जो पार्ट ज़मीन के साथ था इसको यहीं रहने दिया, ऊपर वाला जो पोर्शन था उसको अलग कर दिया. नाउ दिस इज कॉल्ड द पोर्शन विच रिमेन्स इन द सॉइल, दिस इज स्टॉक. ठीक है. वी हैव सेलेक्टेड टू प्लांट्स ऑफ रोजेज विद डिफरेंट कलर्स. In one part we have taken the upper portion of the stem, we have separated it, this is scion. In another plant we have taken this portion of the stem which is still buried into the soil, that is stalk. Now we will take this scion और इसको लेके हम कहाँ, इस पे stalk पे रख देंगे. The cuts are oblique और हम इनको यहाँ ऐसे रखने से ये आपस में join नहीं हो जाएंगे. What will we have to do? We will place some wet soil और cow dung. यहाँ पे हम इसके चारों तरफ wet soil या cow dung रखेंगे. Then we will place a piece of plastic
over it, and then we will tie it with the thread. We will take a scion and a stalk, we will place them one above the other, and then we will join. How can we join? We will place some wet soil or the cow dung around them, फिर एक प्लास्टिक का पेपर लगा के उसको थ्रेड से बांध देंगे. After few days, the xylem and phloem of these two, they will connect with each other and this will start growing. ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है ये कौन से रोजेस लगेंगे? द रोजेस कौन से होंगे? दे विल बी येलो. लेकिन अगर हम ये येलो वाली यहाँ ले जाएंगे इधर पिंक पे, तो हम इस तरह से एक ही प्लांट में हम डिफरेंट कलर के रोजेस जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं. एंड सिमिलरली इट कैन बी डन विद मैंगो ऑल्सो, जहाँ पर हम अलग अलग वेराइटी के मैंगोज कैन बी ग्रोन ऑन द सेम ट्री. दिस इज artificial vegetative propagation. Now what are the advantages of vegetative propagation? This topic is also very important. What are the advantages of vegetative propagation? This method it can be used in the plants where seeds are not produced. This method is a quick method, it is cheap, थोड़ा सस्ता पड़ता है, and it is economical. And then it is done in plants like banana, grapes, pineapple, where there are no seeds. And another advantage is that all the plants which are obtained, they are genetically similar to each other. They are exactly similar with no genetic difference or variation in them.